Hello students, welcome back to ysracademy. We're starting with a new chapter of enhancement in food production in your biology subject. So students, before we talk about enhancement in food production, this chapter in general covers multiple topics across, starting with different methods of plant breeding. We will also talk about animal husbandry, wherein we talk about different kinds of animals which are useful for human welfare. And then students, we're talking about microbes in human welfare. So multiple different topics in a single topic or the chapter of enhancement in food production. So सबसे पहले students start करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के बारे में और जानेंगे प्लांट ब्रीडिंग को लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने को डिस्कस करने हैं. सो विल टॉक अबाउट प्लांट ब्रीडिंग, देन वी टॉक अबाउट ब्रीडिंग अ न्यू जेनेटिक वैरायटी व्हिच इज हाउ डू वी डेवलप a very disease resistant productive yield of the plant. Then we talk about different plant diseases, conventional breeding, mutation breeding, pest and insects, and finally we end up the chapter or the topic. So before we talk about introduction to plant breeding, we'll just have a quick glimpse about some history. India is known to be one of the most largest producers of the pulses and wheat, rice and sugarcane. Agriculture has been practiced in India since thousands of years, since the beginning of the human civilization. Various kinds of domestic varieties are the major food crops that are cultivated now. So बहुत सारे variety food के आज इंडिया में cultivate किए जाते हैं. It can be rice, it can be wheat, it can be different kinds of pulses, it can be sugarcane and etc. The wild wheat is cultivated over years to obtain the improved variety of the crop. So multiple times जब आप wheat को grow करते हैं, तो एक point के बाद एक superior quality of species या superior quality of crops आपको देखने को मिलता है. Improved quality can include yield, better yield, pest and insect resistant, disease resistant against different kinds of bacterial, fungal infections and viral infections. Tolerance to environmental issues can be with regards to salinity, extreme temperatures and drought conditions. So बहुत सारे चीजों को लेकर improved crop variety आपको देखने को मिलता है. एक example आप ये भी ले सकते हैं. Now students, what is plant breeding? To understand plant breeding, it is a purposeful manipulation of plant species to create desired plant types that are better suited for cultivation, which can give yields which are disease resistant. So at the end of the day, we have to understand that अगर आप नया plant breed करवाते हो, तो species has to be superior. Okay, it should be free from different kinds of diseases, it should be resistant towards the diseases, and it should be able to tolerate extreme conditions of the environment. So when you generate a species or a crop which have both of the factors, we talk about something called as plant breeding. Okay, now students, there are multiple steps inside the plant breeding. How do we go about it? The very first is collection of variability, which means कि we collect different kinds of species that we're interested to cultivate and to make them superior. Second step can be evaluation and selection of parents. You will evaluate those plants or the crops for different kinds of parameters, and you also select the best of the best parents. Third step will be hybridization among selected parents. So you allow them to mate for multiple generations. Then out of the species or the offsprings which are obtained, you can select and test the superior recombinants. So जो उसमें से superior रहेंगे उनको select करिए, उनको test करिए, release and commercialization भी कर सकते हैं. सबसे पहला students, cultivation of variability. The first step is to collect, evaluate characteristics and preserve different wild varieties, species and relatives of all the cultivated species. Genetic variability is very important for plant breeding students. अलग अलग टाइप के फीचर्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है. In many crops, the pre-existing genetic variability is available in wild varieties of the crop. So wild varieties में ही बहुत सारे changes या बहुत सारे varieties आपको देखने को मिल सकते हैं. ठीक है. This genetic variability information is stored in the genes of these varieties. So ये variety के अंदर वो already information pre-fed रहता है, तो अपन उसी को use कर एक best kind of variation आप एक particular crop का ले सकते हैं. The genetic material or the information of an individual living being can be termed as germplasm. तो जो भी information है, genetic information है एक particular crop का, एक particular plant का, उसी को आप germplasm बोलते हो. Germplasm collection is of collection of all the genes
इन अ गिवन क्रॉप। एक पर्टिकुलर क्रॉप जो आपने सिलेक्ट किया, मान लो आपके पास 5 वैरायटीज में से आप जो भी बेस्ट सुपीरियर वैरायटी जो भी आप सिलेक्ट करने वाले हैं, उन सुपीरियर वैरायटीज को जब आप सिलेक्ट करते हैं, सो दैट इंक्लूड्स ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइवर्स एलील्स। जो भी अलग अलग टाइप के अलील्स होंगे, डाइवर्स अलील्स होंगे, वो आप उसको कलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल, द वाइल्ड वैरायटी अलोंग with the various types of wheat crops together compromise or comprise of germplasm collection। So बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स का या वैरायटीज का जब आप जीन इकट्ठा करते हो, कलेक्ट करते हो, उसी को आप germplasm कहते हो। From the different varieties of wheat crops, 2 varieties are selected that have desirable traits। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के varieties of traits आपने निकाले हैं। For example, high fiber content is of one trait, then resistant to mildew disease is another trait that we have selected। These selected plants are grown in the fields, they're multiplied in very controlled conditions, pure lines are created wherever desirable and possible। So pure line का मतलब क्या, ये पर्टिकुलर 2 ही कैरेक्टर के लिए, पर्टिकुलर 2 ही ट्रेट के लिए आपने सिलेक्ट करना है। आपने सिलेक्ट किया पर्टिकुलर कैरेक्टर, पर्टिकुलर फीचर, और उसी को आप मल्टीपल टाइम्स ब्रीड कर रहे हो, उसी को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग प्योर लाइन कहते हैं। ठीक है, इसी को चीज, यही चीज को आपने इनहेरिटेंस में भी देखा था कि प्योर लाइन या ट्रू ब्रीड्स क्या होता है। ग्रीन पीज है, उन्हीं का F1 में सेल्फिंग कर दीजिए, आप उसी के टाइप के ग्रीन पीज आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी को समटाइम्स यू कैन ऑल्सो कॉल एज सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन आपको पता है कि भाई अगर आपको वैरायटी क्रिएट करनी है, अगर आपको डिफरेंसेस क्रिएट करने, वेरिएशन क्रिएट करना है, देन क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी यूजफुल। ठीक है ना, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पेरेंट्स आर क्रॉस hybridized to produce offsprings। These offsprings a genetic combination of desired characters। जो अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स रहेंगे, उनका ये कॉम्बिनेशन होगा, और इधर आप उधर मेटिंग करने को अलाउ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पोलन फ्रॉम द मेल प्लांट with high fiber content is transferred to the female plant which is resistant to mildew। तो मतलब क्या, आपने एक कैरेक्टर लिया, एक ट्रेट लिया है, दूसरा ट्रेट लिया है, दोनों को आपने फ्यूज करना है। जब दोनों को फ्यूज करेंगे आप, तो वेरिएशंस ऑब्वियसली क्रॉसिंग ओवर से क्रिएट होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान दोनों के दोनों कैरेक्टर्स मर्ज होके एक सुपीरियर क्वालिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन कैन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी विद डिफरेंट कैरेक्टर्स। बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स मिल सकते हैं। द प्रोजेनी विद डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ बोथ पेरेंट्स आर सिलेक्टेड। जो आपको प्रोजेनी चाहिए, जो आपको सुपीरियर ट्रेट चाहिए, वो ट्रेट को आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। पेरेंट्स, मान लो एक पेरेंट है जिसका हाई फाइबर कंटेंट है, दूसरा पेरेंट है जो रेजिस्टेंट है एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए। F1 जनरेशन में आपको 4 अलग अलग टाइप के वैरायटीज आ सकते हैं। आप उन्हीं वैरायटी को सिलेक्ट करेंगे जो वैरायटी से आपको डिजायरेबल आउटकम एक्सपेक्टेड है। ऐसा नहीं कि आप चारों के चारों सिलेक्ट करेंगे, आपको जो रिजल्ट चाहिए, आपको जो आउटकम चाहिए, उसी के हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू इवैल्यूएट द क्रॉप्स। यू विल गो विद सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, जो सुपीरियर स्पीशीज रहेंगे उनके साथ आप चले जाएंगे। द इवैल्यूएशन इज डन इन रिसर्च फील्ड्स, ओके, वेयर द एनवायरमेंट एंड ऑल द कंडीशंस आर कंट्रोल्ड। These crops are grown to test their performance under ideal irrigation conditions, fertilizer and other crop management practices। So इनको टेस्ट किया जाता है फाइनली टू अंडरस्टैंड कि भाई एग्जैक्टली ये स्पीशीज या ये क्रॉप्स एनवायरमेंट की कंडीशंस को सूट करेंगे भी या नहीं। Crop is then tested in farmers' field for at least 3 growing seasons at several locations in the country। बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पे इनको ग्रो करा जाता है एटलीस्ट 3 जनरेशंस के लिए, ये पता करने की क्या ये डिजायरेबल ट्रेट अपने लिए सूटेड है कि नहीं, क्रॉप का एफिकेसी, प्रोडक्टिविटी है कि नहीं, वो सब चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। द न्यू वैरायटी एंड द रेफरेंस वैरायटी आर कंपेयर्ड आफ्टर टेस्टिंग। सो एक बार आपने टेस्ट कर दिया तो आपको वो जो रेफरेंस वैरायटी जो लैब ग्रोन था एंड जो नया वैरायटी, उन दोनों को आप टेस्ट करेंगे, पता करेंगे और कि वो बेस्ट है कि नहीं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड द कॉस्ट। After passing all the tests, the variety is approved and released commercially into the market। तो ये सब चीजें आपने टेस्ट करी, आपने पता करा कि भाई ये ठीक है कि नहीं, आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। एक बार आपको पता चल गया कि भाई yes, this is only what I want, you can finally approve that crop and put it into the market। ठीक है, in 1943 India witnessed major food disaster which was called as Bengal famine, which was due to administrative failure and many crop failures। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स खराब हुए थे, बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स को डिजीज हो गया था। A fungus which is infected the staple food which is rice in India
The disease caused by fungus is called as leaf spot disease. Okay? So many plant diseases are caused by multiple pathogens. It can be fungus, it can be bacteria, it can be virus. The plant disease, for example, Puccinia triticina is one of the most common fungal diseases affecting the wheat crop and also can cause brown rust disease. Okay, it is caused by Puccinia triticina, characterized by orange to brown color pustules. ये जो eruption जैसा जो है उसी को pustules बोलते हैं on the surface of the leaf. ठीक है, red spot of sugarcane, late blight of potato can be also caused by fungus. Other fungal diseases can also be seen in different kinds of plants, my dear students. Apart from fungus, crops can be affected by bacterial pathogens as well. Common infectious pathogen Xanthomonas compestris that can cause black rot in cruciferous roots or crops like cucumbers, cabbage, cauliflower flowers, etc. So इनके अंदर bacterial disease भी आपको देखने को मिल सकता है. You can see this black rot of crucifers can be caused by Xanthomonas. ठीक है. Then we talk about students plant diseases. ये जो plant disease होते हैं in case of viruses, the very famous virus is students tobacco mosaic virus or the TMV. TMV is very famous and it can cause tobacco mosaic disease in tobacco plants. Tobacco plants में cause करता है. The disease is called as mosaic disease because it develops a mosaic pattern on the mottled लीफ. तो एक टाइप का मोजाइक पैटर्न आपको देखने को मिलता है जो कि पूरे लीफ को खराब कर देगा, पूरे लीफ को डिस्ट्रॉय या डैमेज कर देगा. ठीक है. एप्लीकेशंस कहां पे आप यूज कर सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग को स्टूडेंट्स. सो वी हैव मल्टीपल डिफरेंट प्लांट ब्रीडिंग एप्लीकेशंस. इट कैन बी आइदर कन्वेंशनल ब्रीडिंग और म्यूटेशनल ब्रीडिंग. कन्वेंशनल मतलब ओल्ड स्कूल जैसे ब्रीड करते थे नॉर्मली क्रॉप पे, फार्म लैंड पे, या फिर म्यूटेशनल ब्रीडिंग कर सकते हो जहां पे मैनिपुलेशन होगा, जेनेटिक मेकअप चेंजेस हो गए, बहुत सारे अलग अलग टाइप के फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं. इट कैन बी अप्लाइड टू डिजीज रेजिस्टेंस टू मेक द क्रॉप फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज. इट कैन ऑल्सो बी यूजफुल इन इंसेक्ट रेजिस्टेंस. इट कैन ऑल्सो बी यूजफुल फॉर इंप्रूविंग द फूड वैरायटी और द क्रॉप वैरायटी. Conventional breeding and mutational breeding techniques are used to develop disease resistance crop. Students, conventional breeding में क्या होता है? The most commonest disease in okra is yellow vein or mosaic disease. It's a viral disease and it is a mosaic pattern. You can see बहुत ज़्यादा lightning हुआ है plant का. After screening the different resistant plant, parent plants with the desired traits are selected. जो traits आपको चाहिए superior वाले उनको select करेंगे. These parent plants are hybridized to obtain the plants with desired traits. Multiply करो, offsprings मिलेंगे. After among the progeny, the hybrids with both the traits, दोनों के दोनों traits, this trait, disease resistant trait and a high yielding traits are selected and this is called as a superior breed. पेरेंट्स है, डिजीज रेजिस्टेंस है बट यील्ड कम है, मतलब ये डिजीज को अच्छे से फेस करते हैं बट प्रोडक्टिविटी कम है. ये प्रोडक्टिविटी में ज्यादा है, डिजीज रेजिस्टेंस में काफी कम है, ज्यादा इम्यून नहीं है. दोनों को क्रॉस कर दो तो आपको हाइब्रिड प्लांट्स देखने को मिलते हैं. These selected hybrid plants are self-pollinated for several generations. बहुत सारे जनरेशन तक आप उसको सेल्फ पॉलिनेट करेंगे till they become pure breed lines. मतलब अभी वो सिर्फ और सिर्फ उसी फीचर के लिए इक्विप्ड है जो फीचर्स के लिए उनको आपने सिलेक्ट किया था. ठीक है. These pure breed characters do not separate after crossing. ये लोग एक बार क्रॉस कर दिए तो ये लोग सेपरेट नहीं होंगे, कैरेक्टर्स वैसे के वैसे रहेंगे. Followed by the evaluation of the crops is done in research fields. तो रिसर्च के अंदर आप अलग अलग टाइप के फील्ड्स को इवेल्युएट करेंगे. The performance under ideal conditions is also recorded. कि नॉर्मल कंडीशंस में क्या है वो सब आप रिकॉर्ड करेंगे. The new cultivar quality is assessed by comparing with the best available local cultivator. तो मतलब best available local species है, उनसे आपने जो प्रोड्यूस किया उनको कंपेयर करेंगे और पता करेंगे. For example, such a variety is called as Parbhani Kranti. It is resistant to yellow mosaic and high yielding variety. वायरस को भी resistant है और high yielding भी definitely है, as you can see there. ठीक है. For example, you have multiple examples like disease resistant crop. It can be wheat, variety is Himgiri, resistant to disease like leaf and stripe rust, hill plant. Brassica, variety is Pusa swarnim. Variety can be Karan Rai, resistant to disease like wheat rust. Cauliflower, variety can be Pusa Shubra and Pusa snowball K1, which is resistant to disease like black rot and curl blight black rot.
Cowpea can be variety like Pusa komal, resistance to disease like bacterial blight. Chili variety can be Pusa sadabahar, resistant to disease like chili mosaic virus or tobacco mosaic virus. और leaf curl, students ये academics में या board exam के हिसाब से आपके लिए बहुत important रहेगा. ठीक है, कुछ लिमिटेशंस है स्टूडेंट्स कन्वेंशनल ब्रीडिंग के. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इज लो इन अ हाइब्रिड क्रॉप. आपको आपके फीचर्स का ही मिलेगा 100%, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका 100% नेसेसरी तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट्स अ टीडियस प्रोसेस. अवेलेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन आइडेंटिफाइड एंड प्रेजेंट करंटली आर वेरी लेस. सारे बीमारी आपको पता नहीं, उसके जीन्स आपको पता नहीं, तो आपका डेटाबेस जो है वो काफी लिमिटेड है. उस पे जंप लेना कैन बी वेरी 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 टाइम कंज्यूमिंग एंड आल्सो रिस्की. ठीक है, therefore I hope you know mutation, isn't it? Mutation is nothing but the alteration of the DNA sequences, changes the genotype and therefore the phenotype. जीनोटाइप भी चेंज हुआ तो फिनोटाइप भी चेंज हो गया. द कैरेक्टर्स ऑब्टेन्ड थ्रू म्यूटेशंस आर नॉट फाउंड ओरिजिनली. जो म्यूटेशन से आप कैरेक्टर इंड्यूस करते हो ना, वो आपको ओरिजिनली वो प्लांट में देखने को नहीं मिलता. ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट्स, इट कैन बी फिजिकल एजेंट्स लाइक यूवी रेज एंड एक्स रेज जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं. केमिकल एजेंट्स, इट कैन बी सिगरेट कंपाउंड, इट कैन बी बेंजोइल पेरोक्साइड. बायोलॉजिकल एजेंट्स कैन बी वायरस और बैक्टीरिया. ठीक है, now mutational breeding students क्या होता है, येलो मोजाइक वायरस affects the leguminous plants like मूंग, bean, black gram, soya bean, horse gram, etc. This infection causes significant loss of crops. बहुत सारा नुकसान हो जाता है इस प्रॉब्लम की वजह से, इस बीमारी की वजह से. टू मेक द रेजिस्टेंट वैरायटी, ब्रीडर्स इंड्यूस म्यूटेशंस बाय रेडिएशन. जानबूझकर आप म्यूटेशन यहाँ पे इंड्यूस कराते हो ताकि वो प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट हो जाए, उसको कोई भी डिजीज ना हो. ठीक है, two moong bean plants are taken, one is controlled and another is exposed to radiation. Only one of them is subjected to gamma rays. सबसे important thing, moong bean plants are grown in region prone to yellow mosaic virus. जहाँ पे yellow mosaic virus का infection होता है, वहाँ पे moong bean plants को काफी फ्रीक्वेंटली ग्रो करते हुए देखा गया है. आपने रेडिएशन वर्सेस जो जिसको रेडिएशन नहीं किया उनको कंपेयर करेंगे एंड फिर आपको पता चलेगा कि भाई आपको डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी मिला है या नहीं मिला है. ठीक है, पेस्ट एंड इंसेक्ट्स कैन कॉज सिग्निफिकेंट क्रॉप लॉस. बिकॉज ऑफ दिस yield can also be reduced. Pesticides and sometimes insecticides were used to kill the various pathogens, pests and insects. ये सब अलग अलग टाइप के केमिकल्स आप यूज करते थे ताकि आपका जो क्रॉप का yield है वो एकदम अचानक से सडनली घटे नहीं. इस चीज को अवॉइड करने के लिए यू हैव पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स की वजह से क्रॉप का जो yield है, प्रोडक्टिविटी, वो काफी घट गया है. ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. ठीक है, डिसएडवांटेजेस पेस्टिसाइड्स के, लीड्स टू वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन. ऑफ कोर्स केमिकल है स्टूडेंट्स, वो हार्मफुल फॉर ह्यूमंस इफ कंज्यूम्ड. ऑब्वियसली ह्यूमंस को कार्सिनोजेनिक हो सकता है. पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस डेवलप्स अमॉन्ग पैथोजेंस इन द लॉन्ग रन. एक पॉइंट के बाद कभी ना कभी वो जो पैथोजन जिसके खिलाफ आप वो केमिकल यूज कर रहे हो, after some time or after some point 100% it is sure that that particular pathogen is going to be resistant, isn't it? तो मतलब ये long lasting solution तो बिल्कुल भी नहीं है, एक point तक है. Along the pest and insects, it also destroys useful pollinator insects. Thus it's problematic for local flora and fauna. ठीक है, insect resistance in plants can be different kinds. Morphological characteristics, a few morphological characteristics like hairs on the leaves of the cotton plants help in resisting attacks. So plants के पास भी कुछ अपने अपने defenses है जिसके कारण कभी कभी कुछ हद तक protection मिल जाता है. ठीक है, jacids are common pest found in the cotton plants. Similar structures on the leaf of the wheat crop provide resistance against the cereal leaf beetle. So protection कुछ हद तक मिल सकता है. Physiological, the cotton plants have few physiological characters like flowers are nectarless, leaves are smooth, therefore the insects don't stick to it. These characteristics do not attract the bollworms. Bollworm is a common pest that can infect the cotton plants. ठीक है, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं. मेज प्लांट्स आर कॉमनली इन्फेक्टेड बाय मेज स्टेम बोरर्स. ये कुछ इंसेक्ट्स हैं. बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड्स लो नाइट्रोजन, low sugar, high aspartic acid, which help to resist the crops against these kinds of insects.
ठीक है। अगर आपको ब्रीड करवाना है ताकि आपको इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप मिले तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जो मैंने पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया है। यू कैन स्क्रीन द जर्म प्लाज्म फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंट सोर्सेस, जो आप पता करिए कि भाई इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स या सोर्सेस कौन से हैं, इवैल्यूएट करिए उनको, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करवा दीजिए, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स को कलेक्ट करिए एंड फाइनली यू कैन टेस्ट एंड रिलीज देम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप लाइक ब्रासिका वराइटी पूसा गौरव इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट एफिड्स, flat bean which is variety pusa sem 2, pusa sem 3 which is resistant to jacids, aphids and fruit borer. Okra which variety is pusa savani and pusa a4 is resistant to shoot and fruit borer. ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस यू कैन हैव in order to create a variety which is superior, free from disease, free from pesticides and different kinds of, free from usage of pesticides and insecticides, free from different kinds of pests and insects. ठीक है. Now moving on students to animal husbandry, which is again a very interesting topic. So talking about the components of agriculture, जो कि दो थे, एक plant breeding था और एक animal husbandry है. Animal husbandry basically is a branch of agriculture concerned with breeding, caring and raising the livestock. Animals को breed करवाना, animals को raise करवाना and livestock उनका is nothing but the animal husbandry. Livestock mainly includes cattle like cow, ox, buffalo, camel, pig, sheep, goat, etc. These animals are bred for their products like milk, meat, wool, fur, skin, etc. ठीक है. Livestock products, animal products obtained from these animals is milk, its products like curd, butter, ghee, buttermilk, cheese, etc. The products. Cow हो सकते हैं, goat, buffalo, camel, sheep. Okay, they can be also used for meat yielding livestock for the purpose of meat. We can have buffalo, goat, pig. ठीक है. Sheep का primary product is wool. Other product can be milk, meat, skin, etc. Other extended and important livestock includes hen, which can be useful in poultry farming, honeybee, fishes, crab, prawns, lobsters, silkworm, silviculture for silk production, etc. can also be used as a livestock. ठीक है. India and China have 70% of the livestock population, but they contribute just 25% of the livestock product yield globally. हमारे पास yield काफी ज्यादा है livestock का, but contribution सिर्फ 25% है. Thus, presently per capita productivity by livestock in India and China is low compared to other countries. Indian or Chinese cow yields less milk, okay, whereas the milk yield by cow of other countries is more. The poor productivity is of breed variety. कौन से टाइप का वैरायटी है वो ब्रीड का, उसका मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी कितना है, वो सब चीजें काफी ज्यादा डिपेंड एंड मैटर करती है. ठीक है. प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द एनिमल, रेगुलर वेटनरी केयर, hygienic and proper shelter, newer breeding techniques can be different kinds of management which can be given to the animals in terms of care in order to yield better products and in order to increase the productivity of that particular animal. ठीक है. Dairy farm management. Dairying is the management of animals for milk and its product for human consumption, mainly for cow, goat, buffalo, camel. ठीक है. Following are the 5 important aspects of managing dairy. It can be food, it can be shelter, health, transport and controlled breeding. Dairy farm management, cattle feeding carried out scientifically. Good quality fodder can provide appropriate nutrition. Quantity of fodder is calculated and fed कि कितना उस cattle को खाना पीना देना है, calculate करेंगे, adequate water भी provide करेंगे. Well built shelter, spacious, clean, hygienic, well ventilated environment, ambient temperature and enough water. Regular grooming of animal is necessary for maintaining the health of the animal, maintaining the hygiene, regular inspection and record keeping and periodic veterinary checkups. Transport में efficient, economic, fast, clean and hygienic transport of milk and its product. Stringent cleanliness and hygiene of the cattle and handler while milking. So basically कि transport के दौरान भी we have to make sure कि none of the cattle or any kind of dairy animals are harmed.
a scientific process of mating selected individuals to produce offsprings with desirable characters can be controlled breeding. So you decide what kind of species, what kind of high superior quality you would want to bring about the cross in order to ensure that we have the animals of desirable characters. High milk yielding females, disease resistant male can give you a product, an animal offsprings which is high milk yielding and disease resistant. ठीक है, controlled करेंगे तो it will be always better. Okay, to define breed students, a specific group of animals or plant exhibiting homogeneous characters in appearance and behavior which are distinct from other organisms. So एक particular animal के general features, general characters वो सबको breed कहते हैं. For example, Jersey, which is genetically modified cow, Bos taurus, and milk yield can be about 20 liters per day. So we were talking about enhancement in food production. The next topic of discussion is microbes in human welfare and how are microbes useful for us in our day-to-day life. So what are we going to understand, students? एक तो सबसे पहले introduction to microbes and microbes in household products, beverages में कहाँ पे use होगा. So just to give you an understanding, microbes are tiny living organisms that cannot be seen with the naked eye, जो आप नहीं देख सकते. These microbes are present not only in the human body, but all around, like in the soil, in water, and in the air. Some are found in the most extreme habitats, like soil buried below many layers of the snow. Some of them are found in deep sea hydrothermal vents, where the temperatures can go up to 100 degrees Celsius. So extensive, very high temperatures can be possible. One can observe them with the help of microscope. Hence, they are named as microorganisms. Okay, and they can be magnified for many times. So bacteria can be magnified to 1000x, fungus in the same magnification, protozoa in same magnification, virus can go up to 1 lakh. Prions, which is the product or the intermediate between the viruses, can go up to 1 lakh. So you have different kinds of microorganisms which can be magnified to 1 lakh to 1,50,000 times. It can be adenovirus, it can be tobacco mosaic virus, or it can be a bacteriophage. Now, though microbes are too small to be seen directly, bacteria and many fungus can be grown in nutrient media. बहुत सारे microorganisms को आप nutrient media में grow कर सकते हो, ठीक है? And जब आप grow करते हो तो ऐसे कुछ आपको colonies देखने को मिलते हैं, which is in general you can have bacteria also, which can be different kinds of shapes. It can be spherical, it can be rod, and all of that. ठीक है? Curd, on other hand, household products में कैसे help करेगा? So curd has lactobacillus bacteria, which is a fermented product. Lactic acid bacteria can include Lactobacillus lactis. You can have Lactococcus lactis, Lactobacillus bulgaricus. The lactic acid bacteria are unique as they thrive in acidic environment. ठीक है? Now, this allows them to outcompete any other bacteria in the environment. So, environment के अंदर जो भी other bacteria है उनसे better survival के chances इनके होते हैं. The food fermented by lactic acid bacteria is also protected from harmful bacteria. So जो harmful bacteria रहेंगे उनके खिलाफ भी इनको protection होता है. In anaerobic condition, they perform lactic acid fermentation for energy production. ठीक है? Now the process they have discussed about the process of how the curd is prepared. Basically logic कुछ इस तरीके से कि पहले एक starting culture आप milk में डालते हो, छोटा थोड़ा volume of curd. And फिर कर्ड आप ऐड करने के बाद there is curdling, which is coagulation of proteins due to lactic acid bacteria. And वो lactic acid bacteria से curdling होने की वजह से acidic conditions की वजह से there is formation of what is called as curd. ठीक है? So this is in general the process which we are not going in details of it. So casein एक प्रोटीन होता है and एक वे प्रोटीन होता है जो coagulate करके आपको finally कर्ड बनता है. ठीक है? कर्ड के बेनिफिट्स क्या क्या? इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, वेरी इजी टू डाइजेस्ट, प्रोबायोटिक है, सेफ टू कंज्यूम फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल. जो लोग लैक्टोज जनरली नहीं खा सकते उनके लिए काफी बेस्ट सूटेड होता है. इट कैन एनहांस टेक्सचर एंड फ्लेवर. देन माइक्रोब्स इन सम अदर हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स लाइक इडली एंड डोसा. अगेन इट इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वेयर इन दे हैव टॉक्ड अबाउट हाउ दिस प्रोसेस अकर्स. सो उन्होंने कुछ ग्राम सोक किया ओवरनाइट, देन यू हैव फर्मेंटेशन व्हिच अकर्स. वी आर नॉट गोइंग डिटेल्स. Cheese again is one of the oldest food items, known for the characteristic texture, flavor and taste. ठीक है? Example can be Swiss cheese, Roquefort cheese, etc. ये जो छेद वाला जो चीज होता है, it is our Swiss cheese. Okay.
So again, we have multiple bacteria involved here. For example, Propionibacterium shermani use lactic acid and produce CO2, propionic acid and acetic acid. The released CO2 bubbles are reason for the holes in the cheese. Roquefort cheese again is made from sheep's milk, isolated from a fungus which is called as Penicillium roqueforti, followed by multiple other methods as to how the cheese is formed, produced. जिसके डिटेल्स में जाना जरूरी नहीं है, मगर बाय एंड लार्ज ये याद रखना कि चीज का यूज केस काफी ज्यादा है इन द डेयरी इंडस्ट्री, विच यू शुड बी अवेयर ऑफ. ठीक है. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ कैमेम्बर्ट चीज विच इज अगेन मेड फ्रॉम काउज मिल्क. इट इज मेड यूजिंग मोल्ड पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, known for its smooth and gooey texture. काफी smooth texture होता है. A fungus releases hydrolytic enzymes, digesting and softening the cheese from inside. तो अंदर से चीज को सॉफ्ट कर देते हैं due to some enzymatic action, जिसके कारण जो चीज है वो काफी सॉफ्ट बनता है. Then you have something called as bread. Bread again is fermented using Saccharomyces cerevisiae, which is the baker's yeast. To make bread, we have different kinds of ingredients which is added, and over the period of time, we have something called as bread. Due to the action of Saccharomyces cerevisiae, the bread can become very, very soft or squishy. ठीक है. Again, you can have different types of assortments wherein we can have different kinds of delicacies. It can be pizza, it can be bread, it can be donut, it can be croissant, it can be cinnamon buns, bagels, etc. ठीक है. So ancient Egyptians भी ये baking and brewing का टेक्निक अपनाते थे. So baking and brewing काफी लंबे समय से स्टूडेंट्स चलते आ रहा है. ठीक है. Now when we talk about beverages, we have something called as toddy, which is very, very famous in southern India. The people climb up to the trees and cut at the base of the leaf. Pots are tied to collect the sap. Yeast is present on the palm trees, on the human skin, and even in the air. ठीक है. This yeast ferments the sap naturally, जिसके कारण you get something called as toddy. ठीक है. Then we talk about students methanogens. अब ये methanogens होते क्या है? Methanogens are nothing but those bacteria which can help in the production of methane gas or biogas. So methanogens are bacteria in the rumen of the cattle. Okay, these bacteria can help in digestion of cellulose. Okay. Now there is something called as biogas, which is methanogens are also found in cow dung. Very, very most common methanogen is a bacteria which is called as methanobacterium. Cow dung contains cellulose. Methanogens present in the cow dung act on this material anaerobically. They result in production of biogas. Therefore, cow dung is widely used in production of biogas and also known as gobar gas. Gobar gas उसको बोलते हैं. Biogas is mixture of different kinds of gases. Predominantly आपके पास मीथेन है 50 to 70%, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, few other gases in general. कहां पे यूज कर सकते हैं आप? यू कैन यूज इट इन कुकिंग फूड, डोमेस्टिक हीटिंग पर्पसेस, स्ट्रीट लाइटिंग पे यूज कर सकते हैं. कैन बी यूज एज फ्यूल टू रन स्मॉल इंजन्स लाइक वाटर पंपिंग सेट्स फॉर इरिगेशन पर्पस. ठीक है. द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया mainly due to efforts of Indian Agricultural Research Institute, which is IARI, and Khadi and Village Industries Commission, which is KVIC. In a typical biogas plant, there is a slurry tank, a digester, cover which can act as a gas holder, and a sludge tank. ये तुम्हारा slurry tank है, digester रहेगा, ऊपर से holder रहेगा, एक sludge tank वहां पे भी है और वहां से outlet रहेगा. ठीक है. Now slurry is made by mixing cow dung and water. ये slurry can also contain organic waste. Okay, the slurry is poured into a slurry tank. Slurry tank में आप उसको डाल देते हो. Finally comes to the digester, जहाँ पे microorganisms anaerobic respiration करके they're going to release the methane gas, which is a biogas, और वो biogas उस outlet से बाहर आएगा. ठीक है. During anaerobic respiration of methanogens, a cellulosic material is used as a substrate to produce gases like methane, carbon dioxide, and hydrogen. Combined together, these gases are called as biogas or also called as gobar gas.
The gas then passes through the outlet and is supplied to different households. It can be used for various rural purposes. Large scale production भी हो सकता है, and फिर छोटा सा सेटअप में, छोटे से विलेज में हाउस होल्ड पर्पस के लिए, कुकिंग के लिए वगैरह आप उसका यूज कर सकते हैं. हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल, फार्मिंग, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड सीवेज ट्रीटमेंट के एप्लीकेशंस है. ठीक है. एग्रोकेमिकल्स जो है दे वेरी एक्सपेंसिव, फार्मर्स को अफोर्ड करना काफी डिफिकल्ट होता है. Yield could not be increased further because existing varieties जो है वो conventional methods of agriculture से ही produce हो जाती है. Agrochemicals can cause environmental and health related problems. बहुत सारे health related problems हो सकते हैं. So microbes आप generally दो purpose के लिए use कर सकते हो. एक तो biocontrol agents, second can be biofertilizers. Okay. Biocontrol agents में which can be used in controlling the plant diseases. Pests are called biocontrol agents. Okay. Biological control using microbes is based on the natural predation and not on chemicals. वो naturally work करता है, chemical based नहीं होता है. It is one of the most important parts of integrated pest management. ठीक है. Now, integrated pest management क्या है? It is very economical. Students, baculoviruses are considered as a desirable factor for an IPM, as it helps in controlling the pest without affecting other species. जो अलग-अलग species है उनको बिना affect करे भी ये चीज होता है. ठीक है. नाउ एडवांटेजेस क्या क्या है स्टूडेंट्स इसके? गाइस, नंबर 1 इज डू नॉट कॉज पोल्यूशन टू द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को पोल्यूशन नहीं करता. इन बायो कंट्रोल बेनिफिशियल पेस्ट आर रिटेन्ड बट हार्मफुल पेस्ट आर नॉट. जो बेनिफिशियल उसको रखेंगे, जो हार्मफुल उसको निकाल देंगे. डज नॉट इरेडिकेट पेस्ट कंप्लीटली, एकदम जीरो लेवल पे नहीं लाता, एक कंट्रोल लेवल या मैनेजेबल लेवल पे मेंटेन करता है. ओके. या Now, when we talk about BT cotton, ये अपने बायोटेक में करा ऑलरेडी कि इनएक्टिव रहता है इनिशियली, बट जैसे ही वर्म के गट में जाएगा तो फाइनली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव BT टॉक्सिन एंड देन फाइनली किलिंग द वर्म. ठीक है. फंगस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ बायोकंट्रोल एजेंट. Trichoderma is a species of fungus found in the root ecosystem. It controls several pathogens which can affect plant and therefore can act as a biocontrol agent. So fungus को भी same purpose के लिए आप use कर सकते हो. ठीक है. Virus, again, baculoviruses are the pathogens which can affect certain classes of insects called as arthropods. These viruses belong to the genus of nucleopolyhedrovirus. ये क्या करेंगे? ये अलग अलग इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स को किल कर सकते हैं. ठीक है. The speciality of this virus is that it is restricted to its host and does not kill. बाकी कोई भी ऑर्गेनिज्म को मारता नहीं है. It does not affect vertebrates, non-arthropod invertebrates, microorganisms और plants, किसी को भी ये मारता नहीं है. These viruses are excellent candidate for species specific narrow spectrum insecticidal applications. काफी टारगेट ओरिएंटेड है, तो उसको पता है कि कौन से टाइप के इंसेक्ट को उसको मारना है या अटैक करना है, तो उसको ऑलरेडी ये चीज पता है. They have been shown to have no negative impact on plants. प्लांट्स के ऊपर कोई इसका हार्म नहीं है. मैमल्स, बर्ड्स, फिश और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स, जिसको उसको पता है कि नहीं मारना, उसको कोई भी हार्म नहीं है. ठीक है. एग्जाम्पल कैन बी लेडी बर्ड इज यूज्ड टू किल एफिड्स. ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोस. ठीक है. माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर स्टूडेंट्स. वन वे टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द क्रॉप इज थ्रू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर यूज करके, these are chemical and they contain essential elements for plant growth. They are diverse group of products that contain nitrogen, phosphorus, potassium and other trace elements. However, usage of chemical fertilizers have lead to increase in pollution. ठीक है. बैक्टीरिया को कैसे यूज करेंगे बायो फर्टिलाइजर के हिसाब से स्टूडेंट्स आप? So microbes that can enhance the nutrient quality of the soil, जो soil की quality को बढ़ा सकता है. Biofertilizers are microbes that enhance the nutrient quality. Usage of microbes in chemical fertilizer is promoted because it is eco-friendly. Okay, sustainable है, economical है, and also it is eco-friendly. It can be used in a friendly way. Bacteria, fungus, cyanobacteria are major sources of biofertilizers. The nodules on the root of leguminous plants are formed due to symbiotic association with rhizobium. So rhizobium again is a nitrogen fixing bacteria which can be getting associated with the roots of the higher plants or leguminous plants. Azotobacter is another example of a biofertilizer. ये symbiotic association नहीं दिखाते, मतलब roots के साथ associated नहीं रहते, मगर free living आपको देखने को मिल सकते हैं. Even azospirillum is a free living bacteria which is another example of biofertilizer.
All of these bacteria can play a very important role in nitrogen cycle. They fix the atmospheric nitrogen and can form ammonium. Okay, वो ammonium बना सकते हैं. Later this ammonium is converted into compounds of nitrogen and is used up by the plants. Plants उसको use करेंगे. This way, this bacteria enhance the nutrient qualities. Fungus को कैसे use करेंगे, my dear students? We will have a fungus which is called as mycorrhiza. Mycorrhiza can show symbiotic association between plants and like the fungus and the plant itself, wherein they can form the association. Here the fungus can absorb phosphorus from the soil and pass it onto the plant. Plant को वो pass कर सकता है. Most of the fungus that belong to genus Glomus can be used as mycorrhiza. Cyanobacteria are autotrophic microbes widely distributed in terrestrial environment, many of which can fix atmospheric nitrogen. Example can be Anabaena, nostoc, and oscillatoria. Anabaena azole is a cyanobacterium which lives in symbiotic association and also with free floating water fern, which is called as azolla. ठीक है. Anabaena azole fixes atmospheric nitrogen and forms organic compounds which is similar to bacteria. Bacteria के similar ही ये compounds, organic compounds form कर सकते हैं. ठीक है. In paddy fields where this water rich, cyanobacteria can serve as a very important biofertilizer. Blue-green algae also can add organic matter to the soil and increases its fertility. Fertility value बढ़ा सकता है by just adding cyanobacteria. Currently, we have number of biofertilizers which are available commercially in the market, and farmers use these regularly to replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizer. Chemical fertilizer का use कम करके हम biofertilizer को किस तरीके से use कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा prime importance अपना रहा है. Now, students, we are talking about microbes in industrial products. Industrial beverages में raw material is fermented with the help of yeast. The yeast breaks down the raw material and produces the specific product. ठीक है. Fermented beverages, again we know we are not going into the process of these things, but at the end of the day हमारा intention होता है to produce alcohol or ethanol. Okay, fermented beverages of different types of raw materials which can be used to make different kinds of alcohol. Raw materials can be wheat, it can be grapes, it can be sugarcane, it can be barley, or it can be even potatoes. The production of alcohol takes place by fermentation and distillation. So first is fermentation. You carry out the process of distillation and फिर finally बनता है alcohol. Distillation बच्चों जिनको नहीं पता है, separation and removal of alcohol from all other components to form alcoholic beverages, जहाँ पे अपने alcohol को concentrate करते हो, concentration जहाँ पे बढ़ा देते हो. ठीक है. In distillation, alcohol is first evaporated and allowed to cool. फिर eventually ठंडा हो जाता है. Since alcohol has lower boiling point, it boils first and turns into vapor. Okay, thus these vapors are then condensed in a separate vessel. This results in separation of alcohol from other components. Chemical substances which can be produced by microorganisms against other kind of microorganisms is called as antibiotics. आजकल antibiotics का काफी use होता है. For the very first time, antibiotic was discovered by scientist Alexander Fleming. He discovered the antibiotic in a fungus called as penicillium. ठीक है. Alexander Fleming was working on staphylococci bacteria. He observed a mold growing in one of his lab, जहाँ पे staphylococci जो bacteria वो grow नहीं हो पाया. He found that it was due to the chemical produced, and वो chemical को उसने नाम दिया penicillin, and वो जो mold था, जो fungus था जिसके through chemical निकला था, it is called as Penicillium notatum. Ernest Chain and Howard Florey found the full potential of penicillin as an effective antibiotic. फुल पोटेंशियल उन्होंने आइडेंटिफाई किया, दो और साइंटिस्ट ने, एंड ये ही एंटीबायोटिक वो था जो वर्ल्ड वॉर 2 में काफी ज्यादा यूज किया गया, बिकॉज ऑफ विच दे वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज एज वेल. ठीक है. After penicillin, other antibiotics were also isolated from other types of microorganisms. It can be Cephalosporium acromonium, Bacillus subtilis, Streptomyces griseus, and Micromonospora purpurea. ठीक है. Cephalosporium is for cephalosporin, Bacillus is bacitracin, Streptomyces streptomycin, Micromonosporia is for gentamicin. ठीक है. Antibiotics can be helpful in treating various kinds of problems. It can be plague, whooping cough, leprosy, diphtheria. All of these things can also be possible. Now, enzymes, chemicals, bioactive molecules हर जगह पे कहीं ना कहीं अपने को यूज होता है microorganisms.
So students, when we talk about organic acids, for example, Aspergillus niger, which is a fungus, produces an acid which is called as citric acid. It can be used in detergent manufacturing, preservative, flavoring, and leather tanning. Acetic acid, isolated from bacteria which is called as Acetobacter aceti, can be used as an industrial solvent, cancer treatment, and food. Butyric acid, isolated from Clostridium butylicum, which is a bacteria, can be used in food and flavoring, pharmaceuticals, and perfume. Lactic acid, which is Lactobacillus, a bacteria, can be used in cosmetic industry, pharmaceuticals, and food industry. Alcohol, Saccharomyces cerevisiae, which is yeast, can produce ethanol. Food industry में use होता है, pharma में होता है, और cosmetic industry में तो definitely use होता है. Enzymes, we can have different kinds of enzymes. We can have lipase, pectinase, protease, streptokinase. सबके अपने function है. For example, when we talk about lipase, it can be used in detergent formulations, helpful in removing oily stains. Okay. Then we have streptokinase, can be used as a clot buster in case of myocardial infarction patients, मतलब heart attack वाले patients. Then we can have pectinase and proteinases, which can be used for clarifying commercial fruit juices. So commercial fruit juices में से जो fiber like structure उसको निकालने के लिए use हो सकता है. Something like this. ठीक है? Clot buster जो clot को dissolve कर देगा. Bioactive molecule in Trichoderma polysporum, which is fungus. You can isolate a chemical or a molecule which is called a cyclosporin A, which is an immunosuppressive agent. It can suppress your immune system or immunity. A bioactive molecule, जैसे मैंने बताया, Monoscus purpureus fungus can produce a bioactive molecule which is called statin, which can reduce the blood cholesterol or bad cholesterol. ठीक है? अभी अपन स्टूडेंट्स ये सब डिस्कस करने के बाद ओवरऑल आइडिया आपको आ जाता है कि हम लोगों ने बाय एंड लार्ज ये समझने की कोशिश की है कि चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या. We talked about different kinds of biomolecules. We talked about the use case of different kinds of microorganisms which can be useful in humans. Human welfare can be useful to humans. We talked about plant breeding, the method of plant breeding and the process of it. We also discussed about animal husbandry, different kinds of animals for human welfare, and then finally we landed in the microorganisms. So, ये 3 सेक्शन में चैप्टर को डिवाइड किया था, and I gave you a quick brush up of all of these 3 chapters in general, and I hope that chapter along with the concepts are clear. Okay. I'm assuming that you've been watching different kinds of videos of biology, physics, chemistry as exams are now nearing. I hope to see that, and if at all, definitely if you have any doubts, comment down in the comment section. We'll reply you. If you like the efforts, please subscribe to our YouTube channel, which is YSR Academy. Give it a like button, share it with your friends who may need this help. Different videos for zoology and human physiology are already uploaded on our channel. Visit them, go through them, and definitely get back to us with any kind of feedback that you have. I'll see you guys in the next class. Till then, take care, stay safe, and bye-bye.